I thank the Academic Staff College Nagpur for giving me this opportunity to have a dialogue with participants, basically all my colleagues. A very interesting and topical area of gender and disability. So, मैडम before थोड़ी I, आवाज कम है क्या? आवाज थोड़ी कम है क्या मैडम? hello, am I audible, madam? अपने तरफ से थोड़ा सा वॉइस बढ़ा लीजिए या तो हेडफोन यूज करिए. आई एम यूजिंग हेडफोन सो आई कैन हियर सर क्लियरली. नो इशू. Okay, Yes. so before I go into the complexities of the area, let me briefly define both the concepts, gender and disability. Generally, when we talk about the video, बंद करूँगा, so that so generally when we talk about एक्सक्यूज मी सर. gender, सर आपण मिक्स्ड लँग्वेज यूज करूया. हिंदी इंग्लिश मराठी कॉम्बिनेशन चालेल सर. okay, ओके. I will do that. येस सर प्लीज. So I will briefly chip in with Hindi and Marathi, but predominantly I would speak in English, but I would definitely give my my gist in maybe Hindi and Marathi. So I was just trying to tell you that first let us understand gender and disability. So gender generally is understood as a social role assigned to a group because of her particular situation, and disability on the other hand is something which is again a social construction, and disability is again understood as um, uh, a situation which is by and large determined by the society. तो अगर आप जेंडर और डिसेबिलिटी दोनों की बात करते हो तो आपको समझ में आएगा कि जेंडर एक सामाजिक संकल्पना है और उसी तरह से लिंग जेंडर भी एक सामाजिक संकल्पना है. Now sex is biological, so either you are a man, you are a woman, or you are a person belonging to third gender. But when it comes to gender, gender assigns you role. Gender का मतलब होता है कि gender does not merely take into account your sex, but it would also take into account your role in the society. So, for example, women should generally take softer jobs. They should try and focus on their homes. Men should defend the country by serving in army, etc., etc. Similarly, people with abilities, able-bodied people can perform all activities, all major life activities, whereas people with disabilities, because of their bodily differences, because they normatively their body is not same as the body of the normal, therefore they are inferior and they cannot perform major life activities. तो जो सामाजिक एक्टिविटीज होती है, जो सामाजिक भूमिका होती है, तो एबल बॉडीड लोग उस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं, लेकिन पीपल विद डिसेबिलिटीज जिनको अपंगत्व होता है, तो क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए वो अपनी भूमिका को नहीं निभा सकते. नाउ व्हेन इट कम्स टू gender and disability, basically we are talking about women with disabilities. And if you see the statistics, अगर आप statistics देखेंगे, वर्ल्ड डिसेबिलिटी रिपोर्ट 2011, तो 19% women disabled है compared with 12%. तो पूरे दुनिया में men and women को अगर आप देखेंगे तो 12% men and 19% women, they are disabled. So clearly the number of women with disability are more
than men. Then when it comes to employment, so twice the number of men, disabled men, are unlikely to get employment. तो एक सपोज अगर 10% डिसेबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है तो 20% विमेन को मतलब अगर 10% विमेन मेन को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है तो कंपैरेटिवली विमेन को 2 या 3% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि women with disability are at double disadvantage, where disabled men as well as square normal able-bodied men. And thirdly, जब violence की बात आती है तो compared with the normal able-bodied women, three times अगर 33% नॉर्मल वुमेन अगर वायलेंस सफर करती है तो 99% वुमेन डिसेबिलिटीज वायलेंस को उनके साथ होती है. When we look at these figures, it becomes very clear that on all fronts the position of women with disability is far more vulnerable compared with both disabled men as well as ordinary or normal women, right? Now, how to tackle this issue? Therefore, how to address the vulnerability of women with disability? So, one way out is कि आप जेंडर और डिसेबिलिटी को एक एक्सेस की तरह समझे. When there is a discrimination on the ground of gender and when there is a discrimination on the ground of disability. So the degree of discrimination enhances, compounds, बढ़ती है. तो भेदभाव की जो लेवल है, भेदभाव की जो डिग्री है, भेदभाव का जो स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है जब आप एज अ वुमेन एज वेल एज अगर आप डिसेबल्ड है. और उसके साथ साथ अगर आपकी जाति भी अगर ध्यान में ली जाए, सपोज यू बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास कास्ट, then again the level of discrimination would aggravate, would compound. So therefore, what is to be done? So if you look at the feminism में जब फेमिनिज्म मूवमेंट शुरू हुआ, so the most important argument of the feminists was that law cannot help us in its present shape because the law represents patriarchy. पुरुष प्रधान कानून महिलाओं को मदद नहीं कर सकता क्योंकि पुरुष प्रधान कानून सिर्फ पुरुषों की क्षमता बढ़ाएगा और महिलाओं की विषमता को वो बढ़ावा देगा. तो उसके महिलाओं की विषमता के प्रति संवेदना कानून में कम होगी. So therefore the aim of the feminist was to challenge this patriarchal level assumptions underlying law, challenge the notion that women are weak and men are strong, and try and bring in equality dimension, right? Similarly, जब disability studies movement start हुआ तो कभी यही argument था कि societal notion of disability, the notion of disability is that okay, as a disabled, because your body is different, therefore you are not normal, either you are sick, you are patient, or you need treatment. In other words, the normal society is looking at disability as some kind of abnormality, some kind of disease, or some emergency which requires intervention. तो अपंगत्व को आप एक बीमारी की तरह देखेंगे, जो व्यक्ति अपंग है उसको आप एक बीमार की तरह देखेंगे, और अपंगत्व को एक आप इमरजेंसी की तरह देखेंगे. ओके, सामने वाले को अपंगत्व है तो उसका इलाज कराना चाहिए. In other words, the notion of disability is
influenced by the medical approach to disability. Whereas what is the reality? The reality is not that disability is uh, in the body or disability has medical dimension. The reality is we are confusing, we are not understanding the distinction between impairment and disability. Just as there is a distinction in feminism between gender and sex, sex is biological, gender is social. Similarly, in disability studies, there is a distinction between impairment and disability. तो जो impairment होती है वो bodily होती है, जैसे sex is bodily, but जो disability होती है वो social होती है. So what you will do, you will not take into account the barriers which are created by the society in the way of person with impairment. Suppose I am blind. So what are the barriers created by the society? I am blind women, for example. So what barriers I may face as a blind woman? First barrier I may face is I don't have accessible road to walk. If I want to go alone, I don't have any guarantee that I will be safe on the road, particularly if uh, I'm, 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 I'm on the road in the night. There is no guarantee because as a woman, I'm vulnerable to sexual abuse. As a woman, I'm vulnerable to uh, rape or other mischiefs. Similarly, I'm also vulnerable to accidents because the roads are not uh, sensitive to my special need. Roads do not have curves. Roads do not have beepers. Um, um, Intersections of road between, for example, zebra crossings, etc. They are not uh, um, sensitive to the blind person, blind women. Uh, Similarly, if I am a woman with speech impairment and I cannot speak, for example, and cannot hear, then again my vulnerability increases more because at least as a blind woman, I can speak, I can raise alarm, but as a speech impaired woman or as um, as somebody who cannot hear, तब तो मेरी सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी क्योंकि मैं सुन भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती. एंड आपको मालूम है कि जो नारी निकेतन होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली women with mental illness को मानसिक रूप से जो अपंग होती है महिलाएं वो भर्ती किया जाता है, वो रहती है, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होना बहुत आम बात है. कोई भी उनके ऊपर के साथ सेक्स कर सकता है क्योंकि उनको सेंसिटिविटी नहीं रहती, उनको पता नहीं रहता और फिर कई बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है. तो उसी तरह जब आप देखते हैं कि जो ऑटिस्टिक या जो गतिमान अपंगत्व जिनको रहता है, जो एक्टिव हाइपर एक्टिव रहते हैं, जो जिनकी डिसेबिलिटी, ऐसी वुमेन, अब उनको रोज गाड़ी में बैठाना है, उनको रोज गाड़ी से उतारना है, ये काम जनरली महिलाएं एबल बॉडीड वुमेन नहीं कर सकती. तो जो मेल स्टाफ जो काम करता है तो उस वक्त भी इस तरह की महिलाओं का शोषण, सेक्सुअल अब्यूज के साथ. So all these examples therefore make it very clear that there is a very clear connection between gender and disability and aggravation in discrimination. अपंगत्व, लिंग भेद और अपंगत्व लिंग साथ 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 भेदभाव की भेदभाव का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं. तो उसको फिर कैसे दूर करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो there are three approaches which I will discuss. One approach is known as the dominance approach. डोमिनेंस अप्रोच कहती है कि जब एक एज अ ग्रुप जब आपके ऊपर आपको डोमिनेट किया जाता है, जब आपकी आवाज को सुना नहीं जाता, जब आपकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है, जब आपके अस्तित्व को
बारंबार सवाल किया जाता है. तो such an approach is known as the dominance approach. So if you want to understand the level of dominance or level of domination, then you should understand the different layers of vulnerability. So I am vulnerable because I am women. I am vulnerable because I am disabled. I am vulnerable because I am Dalit. I am vulnerable because I am residing in rural area. I am vulnerable because I am uneducated. I am vulnerable because I don't have a very proper house to stay. I am vulnerable because I don't have drinking water facilities. तो बढ़ते जाता है. जैसे जैसे आपकी आप आपको आने वाली समस्याएं बढ़ती जाती है, उस समस्या के साथ साथ आप आपके ऊपर होने वाले आपका जो डोमिनेशन है, आपका जो दमन है, वो दमन की जो परिधि है वो बढ़ती जाती है. द स्कोप ऑफ द डोमिनेशन की compound. Now, therefore, should we look at gender as a issue between men and women, or should we look at gender as an issue development? मुझे लगता है कि it's not a matter between men and women, it's more a matter of development. If you are not sensitive to gender, you are not sensitive to development. By engaging in gender unjust society, you are also stalling the development. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रगति होती है हमारी, वो प्रगति एक क्लास नहीं कर सकता. उस प्रगति को करने में जितना सहभाग मतलब पुरुषों का होता है, उतना ही सहभाग महिलाओं का होता है. फिर वो अपंग महिलाएं हो या नॉर्मल कोट एंड कोट महिलाएं हो. तो इसलिए अगर हमको डेवलपमेंट को ह्यूमन बनाना है, अगर हमको डेवलपमेंट को रियल फेस देना है, तो we should make gender justice as one of the parameters of development. So it's not an issue between men and women any longer. Secondly, और क्या strategies हम लोग use कर सकते हैं? I will give you some strategies to deal with domination. Yes, the strategies. Firstly, in order to incorporate gender mainstreaming and targeted women's specific policies and programs, as well as positive legislation in development. What we should do: use CRPD, CEDAW, and other rights of women with disabilities, and achieve gender equality. तो अगर आपको लेवल प्लेन फील्ड बनानी है, अगर आपको वुमेन विद डिसेबिलिटीज को उनका जीवन स्तर आपको बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और बाकी के जो महिलाओं के अधिकार है, पर्टिकुलरली उनका जो समानता का जो अधिकार है, उस अधिकार को आपको फोकस करना पड़ेगा, उस अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करें. इंक्लूडिंग मेजर्स टू एंड फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस experienced by women with disability. और उसके अलावा जो उनके साथ हिंसा होती है, वो हिंसाचार को भी हमें खत्म करना पड़ेगा. ये पहली स्ट्रेटेजी. Then strengthen the collection, compilation, and analysis of
national disability data and uh, statistics disaggregated disaggregated by sex and age. तो दूसरा जो आपको कदम उठाना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है, वो हिंसाचार का स्टैटिस्टिक्स है या जो उनको नौकरियां नौकरियां मिलने का स्टैटिस्टिक्स है, उनके एजुकेशन का स्टैटिस्टिक्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स आपको सेक्स एंड एज स्पेसिफिक आपको चेक करना पड़ेगा कि वुमेन को कितना है, कितनी एज की वुमेन की पोजीशन कैसी है. जैसे अगर हम अभी आज की स्थिति को देखें तो women with disability are more in number as older women. Older women with disabilities are more compared with young women with disabilities. So older women with disabilities की समस्या young women with disabilities से बहुत अलग होती है. So therefore ये statistics आपको लाना पड़ेगा. अब जब भ्रष्टाचार की बात जब हम करते हैं तो it is very unfortunate to mention that जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इंडिया का, एनसीआरबी, this national crime record bureau does not recognize even now a category of disabled women, and violence against disabled women as a distinct category of offense is still not recognized. तो जब कैटेगरी रिकॉग्नाइज नहीं तो आपको हिंसाचार के फिगर्स कैसे मिले? तो ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा आह्वान है. Using existing guidelines on disability measurement. अब जो डिसेबिलिटी को आप कैसे तय करेंगे कोई वुमेन डिसेबल्ड है या कोई पुरुष डिसेबल्ड है? तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, लेकिन रिसेंटली एनएसएसओ का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एनएसएसओ का जो स्टैटिस्टिक आया वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स था. उनका कहना था कि 1% से डिसेबिलिटी कम हुई. अब 2018 में एक मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ जो सर्वे होता है, सर्वे ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनका जो सर्वे आता है, उनके हिसाब से कुछ 2.8% लोग डिसेबल थे इंडिया में. अब अचानक 1% कम हो गया 3 साल में. तो ऐसा क्या हो गया अचानक 3 साल में डिसेबिलिटी की संख्या एकदम 1% से कम हो गई? तो जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि इनका जो मेजरमेंट था वो फॉल्टी था. उन्होंने सिर्फ कुछ डिसेबिलिटीज का स्टडी किया. वेयरएज अगर आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को देखेंगे तो इस प्रकार की अलग अलग डिसेबिलिटीज को मान्यता, बट उन्होंने सिर्फ 5 डिसेबिलिटीज को स्टडी करके और उनका जो फ्रेमवर्क था डेटा कलेक्शन का वो बहुत फॉल्टी. तो इसलिए it is very important that we know very clearly the people are trained properly to collect, increase the leadership and participation decision making of women and girls with disability. कितनी women politics में है, कितनी women with disabilities politics में है, कितनी women with disabilities colleges में पढ़ा रही है, कितनी women with disabilities colleges में पढ़ रही है, कितनी women with disabilities sports women है. तो we have to ensure that we build their capacity and we ensure that they participate in different aspects of different domains of society. Identifying key factors, strategies or approaches that can be shared in this regard. And फिर हमको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरह से हम इन वुमेन विद डिसेबिलिटीज का पार्टिसिपेशन समाज में बढ़ा सकते हैं. जेंडर एंड अगर आपने वुमेन विद डिसेबिलिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो नेचुरली ऑल्सो प्रमोट द idea of promote the intersection of, will also take cognizance of gender and disability.
Girls with disabilities, next point, include the rights and empowerment of with women and girls with disabilities, and their inclusion in development development policies, programs, uh, monitoring and evaluation with gender-based budgeting at all levels, including international uh, uh, cooperation. तो जेंडर बजटिंग करने की पड़ेगी आपको, बाहर के देशों के साथ आपको कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, और सबलीकरण के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। सबलीकरण की लिए हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक नीति बनानी पड़ेगी। इंक्रीज कोऑपरेशन, partnership and cooperation, partnerships and synergies between UN entities, organizations, and women and girls with disability. Women's development and human rights organizations, among other among others, to provide sustained and sustainable support for the एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी। तो जो भी एनजीओज है, अलग अलग काम करने, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सब एनजीओज को साथ में आकर और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कोऑर्डिनेशन करके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे हमको ये सब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये एक अप्रोच हो गया जिसको हम बोल सकते हैं कि डोमिनेशन approach. Another interesting approach which is visible is known as the twin track approach. Twin track approach में क्या होता है कि you have to treat women with disability equally, but at the same time you have to also take special measures for women with disability because they are more vulnerable, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय होने की मतलब उनके ऊपर अन्याय होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो ज्यादा है मैन के कंपैरिजन में। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट अपार्ट फ्रॉम द normal track there should be a special track. So this special track would be in special schemes, particularly for women with disabilities, special programs, special funding for women with disabilities. So for example, जो हमारी जो साथी योजना जो है, इसमें महिलाएं साथी का काम करती है शहरों गांवों में, या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो काम होता है, या सर्व शिक्षा अभियान में जो काम होता है, तो इन सब क्षेत्रों में हम किस तरह से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एबल बॉडीड वुमेन के साथ साथ डिसेबल्ड वुमेन का भी सहभाग हो, both as teachers, both as nurses, both as counselors, as well as the beneficiaries. तो ये कितना होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। थोड़ा अगर हम एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक लेवल पे क्या हो सकता है, तो जैसे फेमिनिज्म और डिसेबिलिटी स्टडीज में काफी सिमिलरिटीज है, काफी चीजें सेम है। जैसे फेमिनिज्म में जेंडर एंड सेक्स का डिस्टिंक्शन आता है, वैसे ही डिसेबिलिटी में इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी का डिस्टिंक्शन आता है। जैसे फेमिनिज्म अपोज पैट्रियार्की, डिसेबिलिटी अपोज एबलिज्म। थर्डली, जैसे जेंडर या फेमिनिज्म अपोज focus on body of women. Similarly, the disability studies oppose focus on body the disabled. Then similarly, feminism wants transformation in law. Law में एक मूलभूत बदल की
मांग फेमिनिज्म की रहती है। तो सिमिलरली द डिसेबिलिटी स्टडीज ऑल्सो डिमांड फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लॉ। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि डिसेबिलिटी स्टडीज इज अ न्यूली इमर्जिंग एरिया कंपेयर्ड विद फेमिनिज्म। और अगर हम कानून व्यवस्था देखें, अगर भारत की कानून व्यवस्था आप ले लें तो 75 साल ऑलमोस्ट होते आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल सकते हैं 72 या 73 साल, और हमारी आजादी को 75 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिसके आधार पर हम कह सके अपंगत्व के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक है। ऐसी कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऑन द अदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की प्रोविजन है कि अगर आप अपंग है, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इफ यू आर अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगर आप जज है और जज होते हुए अगर आपकी आपकी क्षमताओं में कोई अगर विपरीत असर हुआ तो आपको हटाया जा सकता है जज की। तो हमारे संविधान में उल्टा इस प्रकार की प्रोविजन है कि आप अपंगत्व के आधार पर व्यक्तियों को अलग ट्रीटमेंट दो, उनके साथ आपको समानता रखने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपंगों के संदर्भ में, अपंग व्यक्तियों के संदर्भ में बहुत ही पिछड़ा हुआ संविधान है समय। हालांकि कानून से अब कहा गया है कि भेदभाव नहीं कर सकते, कानून भी ये कहता है कि अब अगर भेदभाव करने का कारण अगर आप जस्टिफाई कर सके तो आप भेदभाव कर सकते हैं। ये पहला एक बेव कानून है इंडिया में, जिस कानून में सरकार को अपने वर्चुअली परमिशन दे दी है कि अगर आप जस्टिफाई कर सके तो आप भेदभाव कर सकते हैं। तो इसलिए थियरी एक तरफ, लेकिन अगर कानून व्यवस्था का अगर हम कानून व्यवस्था को पढ़े, we take into account the survey of the laws of India, the position is not very satisfactory, and it is very clear from look on various laws that people with disabilities still pay attention. We can't become parliamentarians, we can't become judges, we can't become prime minister, or so on so. Then सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट जेंडर एंड डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आया है, पठान वली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इस जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत क्लियरली कहा है कि आप अपंग महिलाओं द्वारा दी गई गवाही जो होती है, जो एविडेंस होता है, उस एविडेंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा देखा जाता है कि सपोज किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, तो कोर्ट सहानुभूति के आधार पर ही कई बार न्याय कर देता है। लेकिन हमको सहानुभूति नहीं चाहिए, आपको उस महिला को सुनना चाहिए, उस महिला के अनुभव को आपको ध्यान में लेना चाहिए और बाद में निर्णय देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह एक साधारण एबल बॉडीड वीमेन जिस तरह से आप तवज्जो देते हो, उसकी गवाही को जिस तरह से आप तवज्जो विमेन विद डिसेबिलिटीज को। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, और इस केस में भी एक बलात्कार का ही केस था, एक ब्लाइंड विमेन के साथ बलात्कार। तो कोर्ट ने कहा कि एक नॉर्मल एबल बॉडीड विमेन के मुकाबले एक
निचली जाति की अगर महिला हो और अगर वो अपंग हो तो उसके साथ अगर बलात्कार हो तो उसकी परिस्थिति ज्यादा विषम होती है। तो ये अब कोर्ट ने मान लिया है और संविधान में प्रोविजन ना होते हुए भी कोर्ट ने कहा कि जेंडर, जब आप जेंडर ध्यान में देते हो तो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट एबल बॉडी वुमेन, यू हैव टू आल्सो टॉक अबाउट डिसेबल्ड वुमेन। तो एक तरह से कोर्ट ने जेंडर और डिसेबिलिटी को इंटरलॉक कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये इंटरलॉकिंग कैटेगरीज है। इसी तरह आपने सुना होगा कि जो पर्टिकुलरली जो ये महिलाएं होती है जो मेंटली रिटार्डेड होती है या मेंटली मानसिक स्वास्थ्य उनका नहीं रहता है, तो ऐसी महिलाओं के गर्भाशय निकालने का प्रयास होता है। क्यों गर्भाशय निकाले जाते हैं ऐसी महिलाओं के? ताकि अगर इनके ऊपर कोई सेक्सुअल मोलेस्टेशन वगैरह हो तो फिर वो प्रेग्नेंट ना रहे। तो एक जो समस्या आ सकती है उस समस्या का निदान करने के लिए ये सब हम करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये डिग्निटी को ध्यान में रख के है? क्योंकि आप गर्भाशय निकाल के तो प्रॉब्लली आप लाइसेंस दे रहे हो किसी को भी, तो एनीबॉडी कैन हैव अ गो। तो इसलिए कोर्ट ने इसका भी ध्यान, इसके ऊपर भी तवज्जो दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप जब स्टेक्टॉमी करते हैं तो स्टेक्टॉमी करते वक्त आपको इम्पैक्ट देखना चाहिए उसका। उसके अलावा जो दो तीन सुझाव जो मैं और बोलना चाहता हूँ जेंडर एंड कॉन्टेक्स्ट, कि हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो फिक्स वगैरह जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी जेंडर एंड डिसेबिलिटी के बारे में चर्चा चाहिए। उसके अलावा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो वार्ड्स होते हैं तो उस वार्ड्स में भी आपको वुमेन विद डिसेबिलिटीज को उचित रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब तक आप वुमेन विद डिसेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक आप जेंडर एंड डिसेबिलिटी मतलब अपंगत्व और लिंग भेद, ये इन दोनों चीजों को आप ठीक से टैकल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटीज बनानी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी होनी चाहिए। स्टेट लेवल पे कमिश्नर विद डिसेबिलिटी को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनना चाहिए, और नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनना चाहिए, और इन सभी बोर्ड्स पर विमेन विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन जरूरी। मुझे लगता है कि when we look at feminism or when we look at disability studies, still the focus is on the experiences of the men or experiences of the able-bodied, whereas the need of the hour is to enhance the scope of both these bodies, both these subjects, and disability studies should include a critical in analysis of women with disability. Then feminism must also engage with the gender and sex. It must not confine its attention merely to gender. जो जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ, द इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी इन द
2015 development framework and beyond must be while all human rights and development norms and standards apply to women and girls with disabilities. तो अभी भी अगर आप अलग अलग अगर कन्वेंशंस देख ले, कानून देख ले, तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज का जो रोल, वुमेन विद डिसेबिलिटी के बारे में जो संवेदना या उनके अधिकारों की जो व्याख्या कानून में होनी चाहिए, वो दिखती नहीं है. तो 2015 इंटीग्रेशन एजेंडा फ्रेमवर्क और जो एजेंडा है यूएन का, उसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए. For far too long, women and girls with disabilities have been invisible, both the advocates of women's rights uh, uh, and of uh, disability rights, and this has increased their vulnerability. तो जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस को अब अपना फोकस जो अभी तक कम था वुमेन विद डिसेबिलिटी पर, वो फोकस बढ़ाना चाहिए. Women and girls with disabilities are likely to experience the double discrimination as include as because which includes the gender-based violence, abuse, and marginalization. So, gender-based violence से आप आपका आप abuse का सामना तो करते हैं, लेकिन आपका पिछड़ापन और ज्यादा बढ़ता है. As a result, women with disabilities often must confront additional disadvantages, even in comparison men with disabilities and the women without disabilities. So, therefore, what should be happening is on a day-to-day level, we need to start campaigning to be sensitive about the intersection of gender and disability. We should not just look at gender and disabilities as additive grounds. It's not like gender plus disability. No, it's like gender and disability. So friends, with this, I think I would like to conclude my presentation. Basically, this is a topic which is more conveniently describable in English because of the literature. But I have tried my level best to make it as easier as possible. But I think it would be good if you can ask questions, and through questions, I may be able to make the subject more. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय सर. फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए. एनी क्वेश्चन or any Good feedback? afternoon, madam. Good afternoon. Good Yeah. afternoon, Sanjay sir. Sanjay sir, I have a question here that many a times when we are dealing with disabled people, we really don't know, matlab, apart from sympathy, we don't know how to deal with them normally. Like there is a boy in our class who is deaf. So many times we observe that he appears to be very uncomfortable and he is very fidgety, and we try to speak to him, but then we are not able to communicate. तो I mean हम ऐसे इनके साथ कैसे व्यवहार करें ताकि हम समझ सकें कि इन्हें क्या हो रहा है, and to make them feel like more comfortable. Good question. In fact, it is important that we should not have sympathy, we should have empathy. Sympathy doesn't help. And the best thing to do is to have a sensitization of the staff.
And during the sensitization, the staff must be appraised of the special needs of uh, different types of disabilities, right? Now, like my college, when I had a boy, similar boy, so what did is we, we ensured that the teachers who are teaching him, they are properly sensitized, they are made aware of the fact that because he cannot listen, or he basically follows lip reading. So you have to speak slowly, you have to ensure that he is able to read your lips, and you have to give him slightly more time, maybe after the classes. And we also try to ensure that the students are sitting near him, they are able to guide him, they are able to help him, communicate with him. So, for example, we also try to challenge this idea that only language which should be used is the language of the tongue. We can also sometimes use sign language. So, this is one example, but I entirely agree that without training, without proper orientation, sometimes there may be a complete communication deadlock between the disabled students and the teachers and the able body. Yes, sir. Thank you, sir. सर मुझे बस एक चीज शेयर करनी थी। हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात करते हैं, बट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इंक्लूसिविटी अबाउट दिस पीपल नहीं डिसेबल, जो जितना भी परसेंटेज होगा या जो भी होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ही प्रॉब्लम तक ही सीमित हो जाते हैं। सभी, मैं एक एनजीओ के लिए भी काम करती हूँ, हम लोगों ने अराउंड 140 डिसेबल लोगों का टैलेंट शो लिया नागपुर में ही। सो हमको उनके लिए अभी स्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिंपैथी एम्पैथी बहुत होता है, कब तक हम सिंपैथाइज या फिर उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? या हम उनके लिए I ज्यादा think से ज्यादा प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि when you look at disabled, so think that everybody is one way or the other. So everybody has disability one way or the other. जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे, knowing English या not able to drive a vehicle is also kind of disability, right? But हमारा समाज का जो दृष्टिकोण होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज को आप हाईलाइट करते हो, कुछ डिसेबिलिटीज को जब आप डिसेबिलिटी को असमानता के रूप में देखेंगे, इट इज अ भिन्न, इट इज डाइवर्सिटी। जैसे आप कल्चरल डाइवर्सिटी लाते हो, डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाते हो। तो जैसे मैं मेरे कॉलेज में मैंने क्रिकेट मैच करवाया ब्लाइंड स्टूडेंट्स और कॉलेज के हमारे बच्चों के साथ। सो दैट ऑटोमेटिकली resulted in give and take between the groups, and the able-bodied student began to realize that okay, these people can also play, these people can also enjoy, and these people also have talent. सबसे बड़ा इशू होता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इशू होता है, जो जनरल परसेप्शन होता है समाज का कि भाई as a person with disability he is useless or he doesn't have enough talent or efficiency. So we have to challenge this notion, right? We have to clearly emphasize that okay, he may be different because of his or her body, design of her body, but all of us are different. But this difference does not necessarily mean that he or she is inefficient, right? So once we start recognizing this idea that disability is not something which results in lack of abilities, then I think most of the problems. ओके You are सर, absolutely right. Programs Thank you. like you introduced, these programs are the key. यस, थैंक यू। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? Good afternoon, sir. Yes. Sir, I have one query in mind, rather a question. Yeah. That persons with special ability or differently abled persons and disabled
as we were discussing about, are they all same? Well, this is a terminology, right? I always say that abilities are same. So this is a misconception that people with disabilities must be uh, addressed as people with different abilities. My ability to know the law is not different from the ability of my colleague to know the law who is able-bodied. So I don't like to be called as specially abled or person with disability. I am disabled, but why I am disabled? Society has made me disabled. Society has created barriers because of which I am disabled. Basically, I am impaired. I am not disabled. If society removes barriers, my disability will go. Merely because I'm blind does not mean that I can't do anything. For example, technology now allows me to read my books. To technology also now tells me what is the color of my shirt, whether my dress is matching. So gradually, all barriers are coming down, and I think there will be a time when blindness, and for that matter, as you grow old, you all start observing, experiencing the issue with sight. It's just about impairments. It's not about abilities, and therefore it is a confusing terminology. Therefore, I generally like to be addressed, and I use the word disabled, and which is a popular, well-known terminology. Okay, sir. Yeah, thank you, sir. अजून कोणाला काही प्रश्न आहे? संजय सर मैं कुछ करना था। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ मैडम, Yes, yes. बोलिए बोलिए। प्रीति मैडम, हाँ संजय सर, मैं एक बात बताना चाहूंगी। हमारे जो सोशल वर्क कॉलेज है, तो एक BSW सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट होता है, उनका प्लेसमेंट ही डिसेबिलिटी से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग उनको प्लेस करते हैं। ये 18 या 20 विजिट्स जब पे करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और जो हमारे ब्रिटिश बच्चे हैं उनसे भी वो सीखते हैं। इन्होंने, हमारे जो स्टूडेंट्स ने, उन लोगों को पुलिस स्टेशन है या बैंक है, ऐसी जगह पे के उनकी विजिट करवाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये कम्युनिटी में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो उन संस्थाओं तक नहीं पहुंचा सकते या उनका सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए भी उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो सिलेबस में एज ए सोशल वर्क कॉलेज होने की वजह से सिलेबस में इसका कहीं ना कहीं है, लेकिन साथ में प्रैक्टिस जो करते हैं हमारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ने जो मन है साइन लैंग्वेज, वो उन्होंने नेक के वक्त भी किया था या और भी किया था। तो ये सेंसिटिविटी जब हम उनके साथ में रहते हैं तब दिखाई देती है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक हमारे पूर्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेंटली चैलेंज बच्चों के पेरेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं भी हम लोग बात कर रहे थे तब जो फीमेल है, लोग जो है निकालने की बजाय ऑपरेशन करवाना चाहते, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये दोनों उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे हैं। तो ये विषय जो है, हम लोग देखते हैं कि कहीं तो भी छुपा हुआ विषय है, उसके बारे में जो डिसीजंस लेते हैं वो कितना सही है, उसके तो साथ मुझे में नहीं लगता कि उसके इस तरह का ऑर्गेनाइज डिसीजन लेना चाहिए। ये डिसीजन पेरेंट्स क्यों लेना चाहते हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि हाइजीन का इशू है, मेंस्ट्रुएशन का इशू है, इसलिए आप ले रहे हो। लेकिन जब आप इस तरह का डिसीजन लेते हो तो it should be a very well thought out decision, but the decision should not be taken just to ensure that she does not remain pregnant, which is generally the reason, right? Because then
Even in family, she is subject to abuse, right? Family members sometimes are found guilty of exploiting such women. तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत सोच समझ के एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, और इट शुड बी अ मेडिकली गाइडेड डिसीजन. इट शुड नॉट बी अ डिसीजन जस्ट बिकॉज पेरेंट्स वांट सच अ. हाँ सर, ये तो सच है, क्योंकि एक प्रोग्राम में ऐसे ही था कि हम लोग पूना में थे, और डॉक्टर दिगन आमटे, जो प्रकाश आमटे के छोटे जो सन हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत बार यूटेरस निकालना बहुत उस महिलाओं के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये दोनों जो है मेडिकली जो है वो ज्यादा. हाँ, एंड ठीक है. आप जब नॉर्मल महिलाओं का नहीं निकालते हैं तो आप डिसेबल महिलाओं का क्यों निकाल रहे हो, राइट? मतलब आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? And the reason which you are giving is very problematic. Reason generally given is not hygiene. So hygiene is emphasized, but the reason is okay, they are subject to abuse, and therefore we have to. That is, you have to ensure that they are not abused. You can't just give license to people to abuse them. Yes, sir. Shilpa madam. Hello, sir. Hello, sir. Oh, yeah, I can hear. Yeah, but slowly. सर मी मराठी विषयाचा आहे. Oh. आपण आता एक मुद्दा म्हणालात की भारतीय संविधानामध्ये अपंगत्वावर भेदभाव करू नये असं स्पष्ट लिहिलेले आहे. परंतु आपल्या देशामध्ये भारतीय संविधानातली कलम 14(1) नुसार कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, आणि कलम 15(2) नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. तरी पण आपल्या भारतामध्ये लिंगभेद, धर्मभेद, जातभेद अशा पद्धतीचं वातावरण का निर्माण होतं, आणि निर्माण होतं तर याच्यावर आपण एक मुद्दा पुढे उपस्थित केला की या संदर्भाने जनप्रबोधन होण्याची गरज आहे. तर इथे आपण कलम 39 नुसार नुसार जर पाहिलं तर समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य आपण केलं पाहिजे. या अनुषंगाने तुम्ही म्हणजे बोलत असताना म्हणाल की प्रबोधन करण्यासाठी नर्स असेल, नॅशनल हेल्थ क्लबचे असतील किंवा आरोग्य सेविका असतील, यांनी पुढे येऊन जनप्रबोधन केलं पाहिजे. परंतु आपल्या समोर असा मुद्दा आहे सर की कायद्यापुढे इथे सर्वजण समान आहेत, तरी जनप्रबोधन करण्याची गरज का भासतं. दुसरी गोष्ट, कलम 325 या नुसार समान कोणत्याही व्यक्तीला धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणावरून त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास आपण अपात्र असणार नाही किंवा त्या कारणावरून तिला खास मतदार यादीमध्ये सुद्धा घेता येत नाही. हे सगळं समानतेच्या पातळीवर आहे. कलम 14 नुसार भारतीय संविधानातील कलम 14 समानतेचा हक्क सांगते. तरी आपल्या देशामध्ये असा लिंग भेदभाव का केला जातो, धर्म भेदभाव का केला जातो, या अनुषंगाने आपण काय सांगू शकाल? ते डॉक्टर आंबेडकरांनी आधीच सांगितलं होतं की कायद्यामधली समानता आणि सामाजिक समानता याच्यात खूप फरक आहे. कायद्यावरची समानता, कायदेशीर समानता जी आहे ती वरवरच आहे, टॉप, ड्रेसिंग ऑन द टॉप, आंबेडकर साहेबांनी म्हटलं होतं. त्याच्यामुळे कायदा आहे, पण तो कायदा समाजापर्यंत पोहोचलेला आहे का, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. हो ना सर, मुळामध्ये मग आपल्याला कायदाच समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागेल. तेच म्हणतोय ना, तर त्याच्यामुळे त्याच्यासाठीच प्रबोधनाची गरज आहे. कायदा तर आहे पण तो पोहोचत नाही. कायदा तर केलेला आहे पण. आणि अपंगत्वाबद्दलचं जर भेदभावाबद्दल तुम्ही म्हणत असाल तर कलम 14 फक्त जनरली असं म्हणतं, समानतेबद्दल बोलतं, पण त्याच्यात अपंगत्वाची चर्चा नाहीये. आणि 15चा जर आपण विचार केला तर त्याच्यात पण अपंगत्वाबद्दल मेन्शन नाहीये. बाकी सगळ्या गोष्टींचं त्याच्यात मेन्शन आहे. लिंग वगैरे आहे पण अपंगत्वाबद्दल नाहीये. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अपंगत्वाच्या आधारावर पर्टिक्युलरली प्युअर पर्सन विथ अनसाउंड माइंड जी शब्द वापरलेले आहेत, तर तुम्हाला वोटिंग पासून अडवण्या, तुम्हाला वोटिंग पण करता येत नाही, तुम्हाला कुठलंही पब्लिक ऑफिस. तर अपंगत्वाबद्दल
संविधानाची जी धारणा आहे ती काही खूप अशी चांगली नाही आहे आणि त्याच्यात बदल करण्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी काम चालू आहे. पण कसं असतं की भारतासारख्या मोठ्या देशात जेव्हा अचानक संविधानाने आपण बदल घडवून आणायचा प्रयत्न करतो तर तो ते कागदावर तो बदल येतो. आपलं संविधान खूप चांगलं आहे पण त्याचं पर्क्युलेशन म्हणजे वेदर इट हॅज बीन इट हॅज बीन इंटरनलाइज्ड बाय द पीपल की लोकांनी आपल्या संवेदनांमध्ये ते संविधान आणलंय का ते संविधानामध्ये जर आपल्या अजूनही अनटचेबिलिटी असेल, संविधानामध्ये आपल्या अजूनही जर असेल की महिलांनी घरी बसावे किंवा नोकरी करूनही सगळे घरचे काम महिलांनीच करावे, मी काहीच करणार नाही, असं जर असेल संविधानाचं काही ते नावापुरतं संविधान राहतं. म्हणून अशा प्रकारचे जे आपण कोर्सेस आयोजित करत असतो त्या कोर्सेसमुळे प्रबोधन होतं, लोकांच्या संवेदना थोड्या जागृत होतात. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. अजून काही प्रश्न आहे? ओके सर आपण इथे थांबूया. Yes, Okay, so on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my hearty thanks to Dr. Sanjay Jain sir for your discussion and informative session on gender and disability. So once again, thank you so much Dr. Sanjay sir for giving your valuable time. Thank you sir. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you all the participants. He'll end our today's sessions. I have just one instruction for tomorrow's timing. Are you all there? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah. तो कल की अपना रेगुलर टाइमिंग तो सुबह के 2 सेशंस का है एज इट इज. योगा अपना रहेगा 8 to 9. नेक्स्ट सेशन 11 से 12:30 रहेगा. उसके बाद लंच ब्रेक आपका रहेगा 2 बजे तक और 2 से 3:30 फिर हमारा दोपहर का सेशन रहेगा. 1:30 बजे शुरू नहीं होगा, 2 बजे शुरू होगा. ओके, थैंक यू मैडम. ठीक है. Okay, madam. लंच ब्रेक 12:30 के बाद हम डायरेक्टली मिलेंगे 2 बजे. और कल हिरवड़े मैडम का सेशन है. आपके रिक्वेस्ट पे जो पीबीएस का सेशन आपको चाहिए था, तो आपके जो भी क्वेरीज आहे, फॉर्म भरताना काही तुम्हाला डिफिकल्टीज येतात किंवा तुमचे काही पर्सनल डाऊट्स जरी असेल तर ते तुम्ही काढून ठेवाल, म्हणजे उद्या ते सगळ्या गोष्टी डिस्कस करता येतील. ठीक ठीक आहे. है मैडम. Thank you, ma'am. Thank you all of you. ओके मैडम. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. ओके मॅडम. हॅलो हाँ बोलिए सर. हा मॅडम, आजचं जे झालेलं सेशन आहे ते YouTube वरती अपलोड कराल का तुम्ही? सर हे वाला सेशनचं आता सुरू आहे रेकॉर्डिंग, पण मॉर्निंग सेशनचं काय झालं, त्या रेकॉर्डिंगमध्ये एरर आला आहे. तर आता मी सध्या मीटिंग बंद करते आणि हे रेकॉर्डिंग सेव्ह जर होत असेल तर हे तर मी डेफिनेटली अपलोड करते. पण मॉर्निंग सेशनच्या याच्यामध्ये रेकॉर्डिंगमध्ये थोडा प्रॉब्लेम आला आहे, त्यामुळे ते रेकॉर्ड नाही होऊ शकलं. म्हणजे रेकॉर्डिंग कंप्लीट झाली पण त्यामध्ये व्हॉइस येत नाही आहे. तर मे बी हा मॅडम, तर थोडा तो प्रॉब्लेम तीच मला अडचण होती मॅडम. येस. तर आता मी हे वाला पण सेशन होत आहे का रेकॉर्ड, म्हणजे तसं तर मी रेकॉर्डिंग सुरू ठेवली आहे, बट आता बघूया ते पूर्ण सेव्ह होत आहे की नाही. ठीक आहे. जर झालं ठीक आहे तर मी मॅडम. डेफिनेटली हे वाला अपलोड करते युट्यूबवर. नाही, रिपोर्ट लिहिताना थोडासा प्रॉब्लेम यायलाय मॅडम. हो, कारण की प्रेझेंटेशन्स नव्हते ना आजच्या दोन्ही याच्यामध्ये, त्यामुळे हा जितके मॅडम. पॉइंट्स तुम्हाला लक्षात राहतील तेवढे पॉइंट्स तुम्ही, इट इज जस्ट ओके मॅडम, हे थँक्यू कसं, मॅडम. हे लेक्चर नव्हतं ना, हे असं डिस्कशन वाले दोन्ही सेशन्स होते. तर तुम्हाला जितकं मॅडम. समजलं, तुम्ही तुमच्या परीने जितकं लिहू शकता तेवढं तुम्ही इन्क्लूड करा, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे मॅडम, थँक्यू. ओके. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Thank you. चलिए. मॅडम बस. थँक्यू प्रीती मॅडम. उद्या Yes. काय मॅम? हे हिरवडे मॅडमचं कॅश वर पण आहे का उद्या? कॅश वरतीच आहे. हॅलो. सेम उसी टॉपिक पे है. आहे त्याला हॅलो मॅडम.